So from this, right? Were you able to follow how I went from this step to this step? Yep. So now these are just numbers, right? And I can swap them. So I, right? And EI W, one inner product, the other is W. This thing over here, I swap these two. What do I get? I get sum V E I W, right? Yep. Okay. Now this is just the resolution of the identity. So this thing over here. Oh, that's just A, right? That's just identity, Oh, yep. right? I mean, I'm summing. This is the projection operators, right? And you're summing of them all. So these would just be V identity W, which is just VW, and shown that this is true. Okay. Okay. Now I want to use this to find this. Either I use this thing over here, or some other way, even like the general way, to find this equal to this. So how would I do that? Did you solve this? Right? So how would I go about it? Given that this is true, the most simple way would be Just apply those vectors onto yeah. the How? um, find the inner product of brow B with psi. So And I want to show this and I want to use this identity. How should I go about it? Well, I mean, if you think about it, can't I define this thing, A psi, that's to be some phi or W? Yes, good. I can even call it W. Good. Yep. Okay. So now it's trace of W, and instead of V I have psi, right? And this would be equal to psi times W in a product, right? Yep. And now I expand this out, so this is Yep. make sense? Simple. If on the other hand I wanted to generally define it, like without using this, how would I do that? Again, the same thing is going to follow, and I want you guys to solve this. How did I show this left hand side to be equal to the right hand side? You took two bases, EI Yeah. and So EJ. if I apply the same logic here, how would I go about it? Just you multiply that with broad EI and Good, good. cap EJ. So this then would be equal to sum I EI, right? I have inside A and EJ. psi and EI again, right? Yeah, because EJ. Yeah, it's a trace, right? So this thing then would be equal to, okay, I have a number here, I have an expectation here, right? I again swap them around. Exactly the same thing I did here. It's just that this thing is just gonna now result into a expectation value rather than an inner product, right? So what do I get? I swap these around, I get You can do identity. again, right?
So psi ei, and then this thing over here, ei a psi. This gives me identity. I'm left with a psi. Right. Okay. Alright. So let's me start with the questions now. आप तब तक लिखो, मैं ऊपर स्टेटमेंट लिख लेता हूँ. Alice and Bob share a Bell state. Psi equals 1 over square root of 2 plus 1 1. Let C be a 2 cross 2 matrix. Show that trace of C cross identity is equals to half trace of C. Yes. So how should I approach this? You can define C as A, B, C, D, and just take the tensor product with the identity matrix. And take the trace of that and then just show that's equal to half times trace of C. So what you're saying is I define it A, B, C, D, right? Tensor it with identity and multiply them, take the trace and show that this is equal to this. Yep. Right? Okay. That works. But let's do it another way. Okay. So using the results that we have already used, trace of C cross identity will be equal to what? Maybe identity times C times identity. Hold on, just a second. Trace of C. I want to use that fact over there. I have psi is equal to 1 over square root of 2, 1 0 0 plus 1 1, right? Okay, so now I have trace of C cross identity onto psi psi. What would this be equal to?
psi times area, psi times c times psi. Right? Does that make sense? Yep. Okay. Now I hit these with identity, I get again the same thing. From the previous example, you can define C tensor identity as A, so A times. I mean, that identity is not an issue, right? Why is that not an issue? That's just Because a it's not doing anything, and I have size like zeros and one, right? So when it acts on those, I don't have a problem with that. Just thinking about something else. Let me see. Oh, okay. It's precisely correct. So now I just expand these out, right? So what do I have? 1 over 2, right? Because I have 1 over square root 2 from each side, right? So what do I get? I will have 0, 0 plus 1, 1, right? C cross identity plus this thing over here, and then 1, 0, 0 plus 1, 1. Is the first thing only valid if we have a tensor product with identity, or would that work with any? I mean, no, it would work with any, right? Because at the end of the day, these are separate things, right? So it's, you can think of this is acting on this qubit, and this is acting on a completely different qubit, which is this. Oh. Right. So you don't need to worry about that. Alright. So what do I get? Well, the Cx here. So I get 1 by 2 C, sorry, 0 C 0, and the other one would be 0 0, which is 1, right? Plus this is going to give me a 0, because 0 identity and 1, right? So this is basically 1 C 0. This could be anything, right? The other thing would be 1 and 0, right? This gives me 0, right? Likewise for this term over here, right? So all I'm left with is the last term would be, and I can do that as well. So 1 C1 0 C1 and then 0 1. The third term, and the fourth would be 1 C1 1 C1 and then 1 1. Right? Okay, so now this is 0, this is 0, these two are correct. So I get 1 by 2 0 C 0 plus 1 C 1. What is this? Just the entry at 0 0 and the C entry at 1 1. Yeah, it's trace of C. Very good. So this is our trace of C. Right? This is just expanded, and I mean there are just two basis vectors, so 0 and 1. Make sense?
Okay, good. Oh, I think this was a not a good step. Because here I needed to apply the definition of the trace, right? How did I come up with this thing over here? This does not make sense. It does make sense that this is the your definition, right? And from there you get to this point. It's the other way around. I apply the definition of the trace, right, to get here. From here I get here, and then I compute everything. Is that point clear or not? From the previous example, we already know that's true, right? That's why we applied it. Yeah. No, I'm saying, okay, I want to show this thing over here, right? Then I need to apply the definition of the trace first. This is not, I apply the definition of the trace first, and then I continue. Is that point clear? Okay, hold on. What is the definition of the trace? Right? This thing, now when I do this, what do I get here? From the earlier definition, get EI and CI trace of never mind. सही जी क्वेश्चन तो पूछें इस पर जी वही जो मैंने पहले लिखा था वही चीज़ Also, it's just using this fact that this is true, we can just go on from there, right? Yeah. Because this is true, then we can define C as a. Yeah. Okay, let's do the second part. Now let's apply
any one of the four Pauli operators. Matrices by convention we take her qubit to be the first qubit, okay? Use part A, use 1, this thing, to show that for resulting two qubit states form an orthonormal set. ओके जी, अच्छा एक बात ये हमने देखनी है, ये हमने आप लोगों ने अभी तक क्लास में पढ़ा है या नहीं पढ़ा कि एक जो बेल स्टेट होती है उससे हम चारों कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग पॉली ऑपरेटर्स अगेन एंड अगेन, राइट? सो psi, which is that, so k equals 0 means sigma 0, which is just identity. K equals 1 is x and so forth. ठीक हो गया ये बात? Okay. Now we want to show the orthonormality of both. So now phi k, phi l. So these are my all four states, right, for different combinations. K 0, 1, 2, 3. Okay, cool. So this would then be equal to phi k phi k dagger psi times identity times phi l. What is phi l? Oh, I was about to ask that. What is phi l? I mean, just another thing with a different label, right? Because I want to show the all are mutually orthogonal or orthonormal to each other, right? So this is what? Just the sigma L cross identity. Oh, it's just a different. Oh. Just a different label. I'm gonna plug that in. Psi phi k dagger phi L identity squared, but identity squared is just identity, and then psi. ठीक है, ये बात सही है. अच्छा आगे क्या करें? I don't really care about identity because it's not doing anything to my system, right? So by using that first thing जो अभी हमने शो किया है, उसके थ्रू हम क्या इसको कैसे लिख सकते हैं? What is C cross, right? C cross 1. So what was that equal to? Half times trace of C. Trace of this. Trace of sigma k dagger sigma l. Right? This thing over here. Now your first of all, Pauli matrices are Hermitian. So sigma k की जगह पे मैं sigma k dagger की जगह पे मैं sigma k लिख सकता हूँ, right? Okay. The other thing is that sigma k sigma l is equals to kl identity
ये इसका पता है या नहीं पता? EIJK ओके, आगे is sum of I and J, and then this is multiplied by sigma K. this thing. I think some B out there. Actually, I'm not sure. There is some type. Let me see the identity. No, it's just iota and then sigma K ही है, K L M or trace of M. This thing over here. Okay. और वो जो sum आप कह रहे हो शायद इस वजह से आता हो. हाँ, I think this Trace is की definition यूज हो रही है, right? Point क्या है? Oh. ये क्या होगा भाई? Poly operators क्या होते हैं? Okay, hold on. Now मेरे पास ये चीज़ इसके इक्वल है और मैंने इसका ट्रेस फाइंड करना है अगेन, राइट? क्योंकि ये जो चीज़ है ये इसके इक्वल है, हाफ ट्रेस ऑफ सिग्मा के सिग्मा एल. डायगर से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हर्मिशन है. So now I apply the trace. What do I get? आइडेंटिटी ठीक है? नहीं देखा, ट्रेस नहीं आता है. ये सही है. आप क्या करें, आप ट्रेस ले लें दोनों साइड्स पर. इधर भी इस पर ट्रेस लगेगा नहीं, ये एक नंबर है, राइट? इस पे लगेगा, इस पे भी नहीं लगेगा, इस पे लगेगा, राइट? ये तो लेविसेविटा है आपका, ठीक है. यहाँ से क्या आएगा और यहाँ से क्या आएगा? Well, this just gives me delta KL 2. आइडेंटिटी का 2 होता है, बाकी तो सारे ट्रेसलेस होते हैं, राइट? तो ये चीज़ आ गई. उससे क्या बना मेरा? इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इधर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? तो अब सबके लिए शो हो गया. ये बात समझ आई या नहीं आई? So trace of this is this. My job was to compute half of that. So the 2's get cancelled and I can do this here, 2 here, and then divide by 2 here, which is just and shown for all the possible states. ठीक हो गया. ये क्लास पे ऐसे किया था या डिफरेंट तरीके से किया था? क्लास में we had a different definition for वो किसके लिए? sigma k के लिए. But at the end यही आंसर आया था. नहीं वो तो आंसर तो मतलब अगर आपने ऑर्थोनॉर्मल करना है तो you are expecting that, right? At the end. But उसके अलावा जो है ये anyway this is another way. क्लास में ट्रेस के बगैर किया था. जी? ट्रेस के बगैर किया था क्लास में. Okay, ठीक है. बट ये काफ़ी सिंपल है, लाइक ट्रेस वाला काम करके. आई थिंक लाइक 3-4 स्टेप्स हैं और आपका काम हो जाता है. अच्छा, आप थर्ड पार्ट पे चलते हैं. ओके, सपोज ये वाले रिमूव कर दो ना, बाकी दोनों.
suppose Alice performs one of the four Poly operators to her qubit and sends it to Bob. Give the four projectors of the. This is fairly simple. आप लोग बता दें क्या होंगे फोर प्रोजेक्टर्स फोर आउटकम प्रोजेक्टेड मेजरमेंट that Bob would perform on his 2-qubit state. To determine which Pauli matrix Alice applied. बताएं Is the operator applied on the first qubit or the Yes, second? first. By convention, we take the first one. So one would be identity tensor. Oh, sorry, that's tensor identity. ओके पहली बात है ये कह रहा है कि एलिस ने चारों में से सो आपके पास स्टेट ये थी ठीक है अब उसने क्या किया या तो आइडेंटिटी लगा दिया क्रॉस आइडेंटिटी क्रॉस आइडेंटिटी वाई क्रॉस आइडेंटिटी एंड सो फॉर्थ राइट ये स्टेट पे लगा दिया ठीक है और उसके बाद उसने क्या किया उसने बॉब को भेज दिया ठीक है अब वो कह रहा है कि गिव फोर प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स ठीक है प्रोजेक्टर्स of the four outcome projective measurement that Bob could perform on his 2-qubit state to determine which Pauli matrix Alice applied. So आपका measurement operator will be some combination of your projectors जिसमें आपके पास वो 4 projectors आ जाएंगे वो 4 projectors होंगे क्या well it's easy in a sense कि हमें पता है कि Bell states जो हैं चारों की चारों वो क्या करती हैं Superposition. complete set form करती हैं और orthonormal basis है ठीक है तो simply 5 plus 5 plus एक ये प्रोजेक्टर होगा इसी तरह से दूसरा होगा माइनस Cycles. एक्चुअली मुझे इसको लिखना चाहिए उस टर्म्स में वो आप खुद कर लेंगे क्योंकि मैंने डिफाइन उसको ऐसे कर दिया था अपनी आसानी के लिए जब पिछले पार्ट के अंदर व्हाट आई डिड वाज आई डिफाइंड इट लाइक दिस 5k
is equals to sigma k cross identity, right, times the state psi, ऐसे डिफाइन किया था, राइट और फिर वो 5k जो है वो 0 1 2 3 वो आपकी 4 बेल स्टेट्स थी, राइट. सो आई मीन I should technically write it like this 0 0 and 1 1 and 2 2 and so forth, but you get the idea, right. वो सिर्फ लेबलिंग कन्वेंशन है और कुछ भी नहीं, ठीक है. ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? हाँ, तो ये आपके प्रोजेक्टर्स हैं 1 2 3 4. क्या होगा psi minus मतलब जिनको आप psi माइनस कहते हो वो probably psi 5 4 होगा या 5 5 3 होगा शायद. yep. We define psi 0 as the 1 over square root 2 well 0 0 plus 1 1 1 is the Okay. वो I mean वो तो convention. वो आप देख भी सकते हो तो like it's not that big a deal. तो इससे होगा क्या, मेजरमेंट ऑपरेटर उसने लगाया है, अब जिस पे वो प्रोजेक्ट होगी, सो बेसिकली द आइडिया इज दिस, राइट. जो भी स्टेट अब आपके पास बन गई है इट विल बी वन ऑफ द बेल स्टेट्स, राइट. इज दैट पॉइंट क्लियर? क्योंकि हो वही रहा है ना, सिग्मा के ही आपके ऊपर लग रहा है, साई के ऊपर जो एलिस ने भी लगाया है, सिग्मा के क्रॉस आइडेंटिटी लग रहा है साई के ऊपर, राइट. यही हो रहा है. तो अब उससे आपके पास 4 बेल स्टेट्स आई होंगी, राइट. और जब आप प्रोजेक्शन जब आप मेजरमेंट करोगे तो आपके मल्टीपल प्रोजेक्टर्स पड़े हुए हैं, राइट. बट उससे होगा क्या, ये होगा कि आपके पास 5k है, एक्चुअली आइडेंटिटी बन जाएगा क्योंकि मुझे ऐड नहीं करना सारे प्रोजेक्टर्स को, बट द आइडिया इज दिस. This will result in let's say some phi 1, ठीक है, सही है. और अब आपके पास जो मेजरमेंट ऑपरेटर है उसमें कॉम्बिनेशंस पड़े हुए हैं. ये क्वेश्चन में पूछ नहीं रहा इसलिए मैं बताना नहीं चाह रहा था, बट सिर्फ इस तरह से है 0 0 सारे प्लस होंगे तो वो आइडेंटिटी बन जाता है, ठीक है. इसलिए इनके कुछ वो आगे प्लस माइनस होगा, ठीक है. बट द आइडिया इज दिस, ये आ गया, फिर 5 1 5 1, इसी तरह से माइनस कर देता हूँ 5 2 5 2 और एक और 5 3 5 3. बट अब ये पूरा जो मेजरमेंट ऑपरेटर m is going to act on this thing over here, right, जो उसने एलिस ने उसे भेजी है, one of the bell states which will be just 5k. अब वो 5 अगर k equal to 0 होगा तो आपके पास ये वाली स्टेट आ जाएगी, k equal to 1 है ये आ जाएगी, 2 है और 3 है तो उससे आ जाएगी. समझ आ गई इस बात की? अच्छा जी, u of theta जो है ना, let theta be equal to, अब ये क्वेश्चन है 14 है आई थिंक, let theta belong to तो 0 ले सकता है, 2 पाई से पास पास जा सकता है, 2 पाई नहीं हो सकता. u of theta be equal to the rotation operator क्या होता है, ठीक है. अब आप लोग कंप्यूट मुझे जो करते हैं वो phi is basically u of theta times 0 phi perpendicular is phi of u of theta times 1. Tell me, show that zx
phi of this thing is equals to phi. ये मुझे show करो. एक सेकंड आओ. तो इजी है यार. Zx is just I times phi. Right? Z is 100 minus 1. On z times x square. That's Yeah. just minus y. I y. Oh, I y. Sorry. I don't think so. Isn't it? Oh, नहीं वो तो commutator है ना. Yeah. That Oh, is x z minus zy zx is equals to iota y or something like that. Yeah. I thought we could use that now, maybe. नहीं मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने आपको देखें क्वेश्चन में आपको जब उन्होंने बता दी है मैट्रिक्स दे दी है तो बेहतर है कि हम उसे यूज़ करें. अच्छा. ये यूज़ करें ना. The first one just becomes cos, and then उसकी second entry sine. Good. So this is cos theta, sin theta. Good. This one. Minus sine and cos. Minus sin and Cosine. okay. अब करके दिखा दें. तो x क्या करता है फ्लिप कर देता है राइट. फाई परपेंडिकुलर ये है आपका. अगर फ्लिप होगा तो क्या हो जाएगा. So पहले x is gonna act on this right. You get 0 0 1. नहीं मैं x की वो देख रहा था. Matrix form. हाँ x की मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है. ये 0 होती है 1. ना. हाँ. ये होती है राइट. Okay good. So this is minus sin theta cos theta. जब ये stack करेगा तो this is basically just x phi this thing. What it's gonna do is just swap these around. You get cos theta minus sin theta. ठीक है. उसके बाद z जब act करेगा अब इसके ऊपर ऑर्डर मैटर करता है Yeah. राइट. What would this be equal to? Cosine and sine. ठीक है आ गया. कुछ मैं वेरीफाई भी कर लेता हूँ. cos थीटा माइनस ठीक है और उसके बाद ठीक है. ओके. Okay, to show that the Bell state
can be written as ये आप लोग बता दें अब कि इसको ऐसे लिख सकते हैं. How do you think we should approach this? Yes, sir. इसमें से तो कुछ है नहीं हमारे पास, इसी में है. Right, so we know what phi is, we know phi is, and like phi perpendicular is, right? So just tensor, sorry, tensor this with itself, right? Yeah. Right, so 1 over square root of 2 cos theta, so this would be cos theta sin theta, this thing, right? Cos theta and again sin theta. So instead of writing this, I'm just gonna do this. Cosine times cosine. Square आ जाएगा और sin theta आ जाएगा. Cos theta sin theta, right? Again अब नीचे sin था, sin theta, तो cos और फिर ये cos एक आ जाएगा, Sine square. sin square आ जाएगा, right? प्लस इसी तरह से उसके लिए करेंगे. Again sin square है, sin into sin हो जाएगा तो sin square आ जाएगा. Minus into minus, sorry, minus into plus, क्योंकि minus sin theta Cos. into cos theta होगा, right? सही है. अगला होगा cos theta into minus sin theta और cos square theta. ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 0 और ये 1 और ये 1. So what do I get is this 1 over square root of 2 1 0 0 1. क्या ये इसी के इक्वल है? You can write this as 1 times. Right, so right, इस तरह से ये क्या होता है? Exactly. Right, exactly. ठीक हो गया. Suppose that Alice and Bob start with a bell pair. अच्छा, इसका inverse क्या होगा? बल्कि नहीं, actually no, inverse नहीं निकालना आप लोग. वैसे तो आपको इन्वर्स नजर आ रहा होगा कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा. बता दें. Equation matrix का same होता है. Cosine square. Because the determinant is called is 1, right? अच्छा, थर्ड पार्ट लिख रहा हूँ इसका. Suppose Alice and Bob start with the state A and B start
with the Bell state let's see here. Okay, any Bell state. And this applies u theta inverse to her qubit, which is we take it to be the first. Okay. And then measures it in the computational basis. What state does Bob have if her outcome was 0 or when it was 1? अच्छा ये जो बेल स्टेट है ना वो उसी की बेल स्टेट की बात हो रही है जो कि हमने लिखी थी 0 0 और 1 1 ठीक है सही है आप बताएं पहली बात है कि do you need a u inverse of theta like उसकी matrix representation to solve this part Would it not make it easier because then you can just quantify? yeah but I mean first of all we just saw that right in the previous part that this was equal to this thing phi right we saw that earlier in the previous part right okay and you also know that this is true ऐसे ही अगर गौर करूँ मैं अगर मैं इस u of theta को inverse लेता हूँ अप्लाई करता हूँ इस इक्वेशन में so I get u inverse of phi is equals to 0 क्योंकि u ये of theta यहाँ पे क्या आएगा u inverse times u that is this identity so I don't really need it right if I express my Bell state in this term then apply the u inverse I just get 0 ठीक है the reason I was saying is कि जब मैं कर रहा था पहले मैंने यही सोचा कि मैं इसका मतलब क्योंकि इसका इन्वर्स क्या होगा Same. just swap these two right the tagger like the transpose right but फिर जब मैंने ये देखा तो it made a little bit of more sense that I don't even need its explicit form ठीक है इसलिए क्या है और इससे हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है तो अब हमने पहले क्यूबिट पे अप्लाई करना है क्योंकि एलिस ने पहले भी किया ठीक है हम बस assumption लेते हैं कि पहले okay so what do we get 1 over so so the u of theta inverse tensor identity times 1 over square root of 2 and then
5, 5, and then this and this, right? So what do we get? This here, I get 1 over square root of 2, 0, 5 plus 1, 5. 1 कहाँ से आया? वो इधर से आया. जब मैंने इसका लिया था तो इस पर भी मैं u of inverse of अप्लाई करूँ जब ऊपर वाली इक्वेशन पे, so I get 1, right? Make sense? Yeah. So I get this. Okay, so now she measures it in the computational basis, right? So जब 0 आएगा half probability, क्योंकि probability amplitude, ये तो probability amplitude है, इसका square होगा. So with half Bob will get 5, with half Bob will get 5, like this. Make sense? What do you mean by what the outcome runs 0 or 1? The 0 or 1. Yeah. Okay, last part. So suppose that Alice knows the value of theta, जो आपका u of theta में use हो रहा है, right? But Bob does not. Give a protocol using one bell state quantum teleportation कर ली हुई है ना? I think so. I'm not sure. कोई नहीं. And one classical protocol. Give a protocol using one bell state and one classical bit of information. Of communication है वहाँ पे, in which Bob ends up
with qubit phi. Okay. So लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा अभी लास्ट पार्ट के अंदर कि उसको फाई भी मिल सकता था और फाई परपेंडिकुलर भी मिल सकता था। अब हम ये कह रहे हैं कि ऐसा प्रोटोकॉल बताएं जिससे अगर तो दे आर शेयरिंग अ बेल स्टेट और हम एक क्लासिकल बिट ऑफ कम्युनिकेशन करते हैं, एक बिट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो बॉब हमेशा फाई के साथ एंड अप करे। अच्छा, let's talk about what we know about the question because we want to define like a protocol, right? पहला ये कि they share a bell state. Second, Alice apply करता है U dagger. To her qubit. और उनको मेजर कर लेता है। To M या तो 0 होता है या 1 होता है मेजरमेंट आउटकम, राइट? अच्छा, अब अगर ये इंफॉर्मेशन वो बता दे एल बॉब को, जो कि हमें है कि वन क्लासिकल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? We need that to be 0, right? No. हाँ, but yes, you're right. But we, in any case, we want to end up with phi. And obviously, there is a possibility when Bob makes a measurement, he will get phi perpendicular. Yeah. So how do we deal with that? वो उसको बता दे कि भाई ये है या ये है। तो अब आप चले जाएं क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के पार्ट ए के ऊपर, राइट? अगर तो मेजरमेंट वैल्यू 0 है तो कुछ भी ना करो, अगर मेजरमेंट वैल्यू 1 है तो क्या करो? Yes, zx लगा दो so that you end up with that's it. ठीक है, ये बात समझ आ गई? अगर तो मेजरमेंट आउटकम 0 है तो डू नथिंग, अगर मेजरमेंट आउटकम 1 है तो ये लगा दो। So just one more gate आपने लगाना। हाँ, And that's it. मतलब 2 gates, but I mean yeah. That's about it. The interesting thing is कि सिर्फ एक classical bit inform, like I want to go into the details of the, वो हम कर लेंगे, वैसे आसान काम है, इतना मुश्किल नहीं है टेलीपोर्टेशन वाला, बट वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लासिकल 2 बिट्स चाहिए होते हैं, यहाँ पे एक चाहिए, so that's something little bit interesting. जब आप वो कर लोगे तो फिर ज़्यादा बेहतर इसकी फिलॉसफी वाली समझ आएगी। ठीक हो गया, थैंक यू। Thank you so much. आपका अच्छा, अगर कोई इसका मूड है आप में से किसी का तो मैं अभी दे सकता हूँ, सवाल हैं, बट आई वुड प्रेफर दैट मैं आपको प्रॉब्लम शीट भेज दूँ जो बेसिकली डॉच जोजा और जो बर्स्टाइन वाला है, क्या है, आई फॉरगेट द नेम ऑलवेज, बट उसके ऊपर फिर आप लोग ये कर सकते हो कि अच्छे तरीके के साथ वो पढ़ लो, क्योंकि पेपर आप लोगों का है, मेरा तो नहीं है। फिर ये है कि मंडे को अगर कोई प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि मंडे को ट्यूटोरियल तो मैं रखूँगा ही, और फिर ये है कि उसके अंदर वो मनी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो करा दूँगा, ठीक है?
तो जस्ट फॉर द स्टार्टर, अगर अभी आप एंथुजियास्टिक हो रहे हैं, तो हमने ये एल्गोरिदम जो था डाउस-चोज़ा, ये ज़ीरो को हेडर मार लगाया ज़ीरो के ऊपर, राइट। आप 1 के साथ करके देखें और देखें कि उससे एफ ऑफ एक्स जो है, जो आपका ऑरिकल है, राइट, उस पर क्या कंडीशंस लगती हैं। ठीक है, ये करके देखते हैं, मतलब एक सिंपल हुआ। थैंक यू सो मच। नो वरीज, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।